So, good morning, students. So, today we'll start with the second lecture. This is the second lecture, right? In the first lecture, I'd given the few information regarding the syllabus, examination scheme, term work कैसा रहेगा या on what basis term work will be finalized, plus what are the books. ये थोड़ा इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. In this particular class I'll start with the actual syllabus. ठीक है. So I hope and बहुत important point है जो भी हम videos बना के मैंने I think in the previous class I already told these points कि basically what we are going to do is we'll try to whatever the according to syllabus university syllabus के हिसाब से जो भी 3 lectures per week या 4 lectures per week है वो हम through ऑनलाइन ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग या यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना या हम जूम या दूसरा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम आपको वीडियो बना के या वीडियो डायरेक्ट ऑनलाइन पे सिखाते हैं. ठीक है. तो इसका पूरा आप यूटिलाइज करो बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोरोना. सो स्टिल ऑल दिस थिंग्स आर कंटिन्यूइंग. सो दैट्स वाई यू हैव टू बी सेफ एंड विद इन आवर जो भी सेफ्टी इसके अंदर रह के आप इस वीडियोस को या इसको पूरा यूज़ करो. ठीक है. बिकॉज वंस द सिलेबस या सब ख़त्म होने तक ये सब कम हो जाता है तो आप नॉर्मल एग्ज़ाम रहेगा, बहुत सारा टर्म वर्क से वो सब रहता है. तो वीडियोस प्रॉपर से आप देखो. कुछ डाउट्स है तो पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो और डाउट क्लियर करवा सकते हो. ठीक है. सो as I already told in the previous class, from today we'll start with the actual syllabus. Then and whatever the assignments are there regarding unit wise जो भी है, so I will keep on posting in through Google Classroom. ठीक है. Okay. चलो we'll start. See, subject name is fluid mechanics 2 and you can see just for इंफॉर्मेशन के लिए यूनिट 1 का सिलेबस लिखा हूँ. वी नो द यूनिट 1 इज once again divided into 2 parts. The first part is fluid flow around the submerged objects and the second part is unsteady flow. ठीक है. So within those 2 parts there are a number of topics are there. So we'll cover all those things. So first I will start with the that is a part A or part first of the unit 1, that is fluid flow around submerged objects. So you can see here first before going into that submerged matter or submerged objects, so we'll see what is fluid first. ठीक है. See, a fluid is defined as a substance that deforms continuously under the action of shear stress. That means if you take any object or any material which you apply the force, okay, it is a substance. Like if you are applying some stress on that one, so it keeps on continuously, it will be like a deform होता रहता है. So this type of substances are called as fluids. ठीक है. Basically एयर इज़ ऑल्सो फ्लूइड. और फ्लूइड बोलते ही हम नॉर्मली विल सी लाइक लिक्विड को, वाटर ऐसा लिक्विड को हम फ्लूइड मानते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. इवन एयर इज़ ऑल्सो ए फ्लूइड बोल सकते हैं एंड वाटर और लिक्विड इज़ ऑल्सो ए फ्लूइड बोल सकते हैं. ठीक है. सो इट मीन्स दैट a fluid deforms under very small shear stress but a solid may not deform under that magnitude of the shear stress. So that means for very even a small amount of shear stress, if you apply on that particular substance or any made substance, then that keeps on continuously deform होता रहता है. So solid it will not happen. For that small amount of shear stress, solid will not deform. Or I can say that it will deform but not continuously deform. जैसे कि सम आपने एक थोड़ा शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया उसके ऊपर या फोर्स अप्लाई किया, सो नॉर्मल बेसिकली क्या होता है कि अगर रिजिड बॉडी है या रिजिड सब्सटेंस है, सो इट में डिफॉर्म अप टू वन लिटिल बिट एंड आफ्टर दैट वन इट विल बिकम स्टेबल.
But whereas if you take the fluid substance, so it keeps on continuously deform होता रहता है. That is the main difference between, or that is the point which differentiate the solid and the fluid. ठीक है. So you can see the diagram. Here there is one diagram. So there you can see that you can see there is a shear stress here, correct है. So this shear stress I am applying on a, समझो एक substance के ऊपर. This is solid and this is fluid. ठीक है. So I have written here deformation of soil under the constant shear force, and here deformation of the fluid under the constant shear force. So you can see constant दोनों पे same force apply कर रहे हैं, but this particular substance is only deformed this much and it will get stable. But when it comes to the fluid, it keeps on continuously move होता रहता है या डिफॉर्म होता रहता है. एक्चुअली दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज क्या बोलते हैं, एनिमेटेड है. तो इसमें दिखाता है कि इट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली ऐसा बेंड होता रहता है. अभी इधर इतना है, सो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पूरा ऐसा बेंड हो जाएगा ऐसा. ठीक है. सो नेक्स्ट लेवल पे और भी कीप्स ऑन डिफॉर्मिंग. ठीक है. So you can see when a shear force is applied to the upper plate to which the solid has been bonded, a shear stress resulted by the force equal to tau is equal to force by A, where A is the contact area of the upper plate. So that means sometimes if you take when a shear stress of the force, when a shear force is applied on the upper plate to which the solid has been bonded, so that means this material is solid and you can see there is a ऐसा दो plate है and you're applying the force on that upper plate. ठीक है. Have been bonded, a shear stress is resulted. Obviously when you apply the force and there is a plate, there will be a shear stress will be generated or resulted. Then that shear stress is nothing but tau is equal to force by area. You know the stress is nothing but force by the area. ठीक है. And that area is nothing but the area of this plate, upper plate. ठीक है, because you are applying the force on that upper plate. Okay. When a fluid is between the plates, so now you take this second case. Now here it is the fluid is in the between the plates. The deformation of the fluid elements continues to increase as long as the force is applied. So that means we keep on applying the force, same force, constant force, but it keeps on deforming. ठीक है. The fluid particle is in direct contact with the plate, move with the same speed of the plate. Okay, so this point is important. What is telling is the fluid particles in the direct contact with the plates. So एक second, see, you can see in this particular picture, if you take this is all this is I'll take some other color. Okay, I'll take blue. See, this is all fluid. ठीक है, continuous fluid is there, but in within that fluid, this fluid which is contact with the plate, ये जो ये जो बाउंड्री पे जो फ्लूइड है जो प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, so that fluid that fluid, what he is telling is direct contact with the plates move with the same speed. जो प्लेट, एक प्लेट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, तो प्लेट जो वेलोसिटी से स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड में वो लेयर जाएगा, जो लिक्विड जाएगा जो प्लेट के साथ कांटेक्ट में. ठीक है. ये थोड़ा बाद में इसका कॉन्सेप्ट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. इन ए शॉर्ट, a fluid continues in motion under the application of shear stress and cannot sustain any shear stress when at rest. So that means what he's trying to tell is even a small amount of shear force आपने अप्लाई किया, so it will start moving. ऐसा नहीं है कि फ्लूइड रेस्ट पे है और थोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो सस्टेन कर रहा है, मतलब वो मूव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. थोड़ा भी फोर्स लगा है ना तो फ्लूइड विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है. Okay, next some more introduction. See, this is basic introduction. So now we'll little bit discuss introduction to the topic itself, that is unit 1. ठीक है. See, several problems involving the flow of fluid around submerged objects are encountered in the various engineering fields. See, in this particular topic, the first you are seeing that is it is all related with the
fluid around the submerged objects. ठीक है, then there are some practical problems you are going to encounter in this type of cases, that is when the object is submerged in the fluid. ठीक है, so such problems may have either fluid flowing around a stationary submerged objects. So that means there are different cases. These are the different problems we are going to encounter when the object is in submerged inside the fluid, in the fluid. ठीक है, so in first case is the object is submerged object is stationary. that means वो बंदा एक ही जगह पे रुका है बट फ्लूइड मूव हो रहा है या फ्लो हो रहा है. ठीक है, that is the first case. Second case is an object moving through a large mass of stationary fluid. Otherwise दूसरा केस है the object is submerged but it is moving and the fluid is stationary, and that is a large fluid which is in stationary. ठीक है, and the third case is both the object and the fluid being in motion. So third case में submerged object जो fluid के अंदर submerge हुआ है वो भी move हो रहा है और object भी move हो रहा है. सॉरी, submerged object जो immerse हुआ है, submerged हुआ है, वो भी move हो रहा है और fluid भी move हो रहा है. ठीक है, so these are the three cases. very simple three cases है. फर्स्ट वाला fluid stationary है, सॉरी fluid move हो रहा है और जो सबमर्ज हुआ ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी है. सेकेंड वाला वैसा वर्सा. ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और फ्लूइड रुका है. थर्ड वन इज दोनों मूव हो रहे हैं. ठीक है, और बोथ द टू ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट प्लस फ्लूइड आर मूविंग. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. ठीक है, हर एक केस के लिए एग्जांपल्स है. जैसे कि एग्जांपल फॉर केस वन, दैट इज फ्लूइड मूव हो रहा है बट इमर्स्ड जो हुआ है, सबमर्ज हुआ है ऑब्जेक्ट, वो स्टेशनरी पे है. फॉर एग्जांपल इज ब्रिजेस या रिवर के ऊपर जो ब्रिज बांधते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द ब्रिजेस. सो यू कैन सी इन दैट वॉट एवर द पियर्स आर देयर, सो दोज आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बट रिवर के अंदर वो इमर्स हुआ, सबमर्ज हुआ रहता है. सो पानी के अंदर सबमर्ज हुआ रहता है एंड पानी फ्लो होता रहता है. करेक्ट है ना, तो पानी पूरा फ्लो होता रहता है प्लस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स वैसे ही रुका रहता है. So if you see the plan of that pier, समझो this is एक ओवल शेप का पियर था ऐसा. ठीक है, तो आप देख सकते हो, समझो दिस इज स्टेशनरी था. ठीक है, ऐसा पियर्स रहेगा ऊपर. आई एम शोइंग द ब्रिज पियर्स का टॉप व्यू. ठीक है, एंड पानी विल बी फ्लोइंग लाइक दिस. पानी विल बी ऐसा, it will be flowing. Correct. So here it is, this is sorry, this is stationary, this is moving. This is the first case. Done. So that is the first case. Second case is submarine moving in ocean. So that means an object moving through a large mass of stationary. See, basically if you see the ocean, so ocean is like stationary है if you compare that area and all. So and especially in deep ocean गए तो the water is stable or stagnant है and the submarine is moving. So in this case fluid is at rest and the submerged object is moving. ठीक है, तो that is the second case के लिए example है. The third case दोनों move हो रहा है, that is fluid also it is moving and submerged object is also is moving. We can take aeroplane or anything which is aeroplane best example है कि aeroplane क्या होता है, हवा that air is the fluid and if air is also moving and aeroplane also is moving, it doesn't matter that which direction both are moving. ठीक है, मे बी इट इज़ अपोजिट टू ईच अदर हो सकता है, कभी कभी दोनों सेम इसमें हो सकता है. सो इट डिपेंड्स. So that is also one example for third case, that is both object submerged object and fluid are moving. ठीक है, see in the case one जो पियर के बात कर रहा था, इवन बिल्डिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम जो बिल्डिंग, ठीक है, that particular building and it is surrounded submerged in the fluid, where fluid is air. So that building is
at rest, stable पे, correct है, it is not moving, but here is correct है, air will be traveling in one direction or any other direction. So that means the object is stationary and it is submerged in the fluid, and here fluid is air. क्लियर है? आई होप आपको ये प्रैक्टिकल जो ना प्रॉब्लम्स है, सेवरल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का जो 3 केसेस है वो समझ में आया. चलो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. See, this is another concept which is have to understand. It's a basic concept है कि whenever that there is an object, immersed object or submerged object, ठीक है, so fluid उसके ऊपर जब भी उसका थ्रू पास होके जाता है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू जनरेट सम फोर्सेस और इट इज़ गोइंग टू अप्लाई सम फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट. से फ्लूइड मैकेनिक्स बोले तो क्या है, फ्लूइड आपको पता चल गया, फ्लूइड बोले तो क्या है, मैकेनिक्स यू ऑलरेडी नो, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडिंग द फोर्सेस. So fluid mechanics means you are going to talk about the forces which are generated because of the flow of fluids and what type of forces it is and what type of losses या उसको कैसे डिज़ाइन, all these things we are going to discuss. ठीक है. So now you need to understand that what type of forces will be acting on that particular object. Clear? So next heading you can see here the forces or force exerted by a flowing fluid on a stationary body. Okay. See, if a body of a arbitrary shape held immersed in a large stationary mass of fluid and is moved with a constant velocity through the fluid, the body experiences a force which tends to oppose its motion. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल फंडा. ये समझो एक बॉडी है आर्बिट्री शेप का. राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक आर्बिट्री शेप. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक सम स्टैंडर्ड शेप का बिकॉज उसका अलग फंडा आता है. एंड समझो इट इज़ इमर्स्ड और सबमर्स्ड इन द लार्ज स्टेशनरी मास ऑफ फ्लूइड. ठीक है. एंड इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड. सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ठीक है. एंड द बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स विच टेंड्स टू अपोज इट्स मोशन. ऑब्वियसली इमेजिन करो हवा में पूरा ऐसा फ्लूइड है और इधर स्टेशनरी या मूव हो रहा है. ठीक है. समझो सबमेरीन का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे फ्लूइड रुका है बट सबमेरीन पूरा इमर्स हुआ है या सबमर्ज हुआ है और विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी मूव हो रहा है. ठीक है. ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू फेस सम अपोजिट फोर्स. दैट अपोजिट फोर्स विल बी जनरेटेड. फ्लूइड्स जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको अपोज करेगा, उसका जो भी रेजिस्ट करेगा उसका फ्लो को. ठीक है. सो नाउ इफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ मूविंग बॉडी but opposite in direction is applied to the above system, then the body will be held stationary and the fluid will be moving in the opposite direction. अभी इमेजिन करो. ठीक है. जो सबमेरीन जा रहा था विथ सम फोर्स इनिशियल वेलोसिटी, समझो एक 10 kmph स्पीड पे जा रहा था. ठीक है. विथ वाटर में एंड द वाटर क्या कर रहा था, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई, फोर्स रेजिस्ट कर रहा था बट स्टिल सबमेरीन उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आगे जा रहा था. नाउ इमेजिन द सेम वेलोसिटी. ठीक है. दैट इज 10 km/h का. इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो दोनों बैलेंस हो जाता है. तो उधर से पानी इसको फ्लूइड इसको मार रहा है और इधर से भी 10. सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन इज द ऑब्जेक्ट बिकम स्टेशनरी एंड द फ्लूइड विल बी फ्लोइंग. तो मतलब वो आगे नहीं जाने से दे रहा है. ठीक है. ऑब्वियसली फ्लूइड विल फ्लो. तो वो फ्लूइड क्या करता है, ऑब्जेक्ट के सरकमफरेंस या जो भी बाउंड्री लेयर से गुजर के वो निकल जाता है. बट जो ऑब्जेक्ट था, इन आवर केस समझो सबमेरीन था, उसको आगे नहीं जाना देता है. ठीक है. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द मूविंग बॉडी मे इन जनरल बी इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. This is another important point. The force exerted by the fluid on the moving body may in general be inclined. Okay. See, normally क्या होता है, the whatever that the force which is exerted by the fluid on the body रहता है, it will be inclined to the generally it is inclined to the direction of the motion. So you can see in this particular case, so this is the ये explain करूँगा, this is the direction of the motion of the fluid. ठीक है. And this is the body. You can say this is one I have taken a body, cross section of a body, airfoil है वो. ठीक है. So that is in this case
whatever the force is exerted on by the fluid on the object is generally inclined to the direction of the motion. So this is the direction of the motion, तो उसका inclined force रहेगा. You can see that F. So now I will remove all the colors so that you can see easily. ठीक है? So you know mechanics already. So if the force is inclined, and that force can be resolved into two components, two forces. One is along the direction of x-axis, and second one is along the direction of y-axis. So that is what I had done in this case. Okay, so you can see there is a force. This is the force which is acting on the object by the fluid, and which is inclined to the direction of the motion of the fluid. So this force is divided into two components. One is along the direction of the motion, which is x direction, and another one is along the direction perpendicular to the direction of motion, which is vertical. Okay, so for both this thing I taken, if this is F, this is FD, and this is FL. We'll discuss that one. Okay, so now hence it has a component in the direction of motion, as well as one perpendicular to the direction of motion. Just now I explained that one. Next, the component of this force, that is the component of the force F, which is inclined to the direction of the motion, correct? So the component of the force F which is in the direction of the motion, this one, okay, is called as drag, D-R-A-G, drag. Okay, that's why I had given either FD, that is drag force. Okay, second one, the component which is perpendicular to the direction of the motion, so this one, okay, is called as lift, L-I-F-T, lift. That's why I had given the name FL, lift force. Very important concept है, and examination में पूछा जाएगा. ठीक है, so you should know what is drag and what is lift. So drag force is nothing but the force or the component of the force which is inclined to the direction of the motion of the fluid. ठीक है, and lift is a force which is perpendicular direction of the force of the inclined force. Okay, so next, for a symmetrical body such as a sphere or cylinder facing the flow symmetrically, there is no lift, and thus the total force exerted by the fluid is equal to the drag on the body. If you take the symmetrical objects, so that time there will be no any lift component, ठीक है, because it is be equally force distribute हो जाता है. So that's why there will be no any lift component, only you will get the drag force. ठीक है, so that is about the lift and the drag. ठीक है, so for this class I will stop it here itself. In the next class I will continue with the expression for drag and lift and other concepts. ठीक है, I hope आपको ये particular topic समझ में आया. So basically we are discussed about the introduction to the fluids and all. Little bit syllabus देखा, बाद में थोड़ा बहुत fluid बोले तो क्या है उसके बारे में थोड़ा देखा, study किया. Then we discussed about the whatever the practical problems we are going to face when you are talking about the submerged objects in the fluid. उसके बाद we discussed about how the force will be distributed. Then we discussed about the definition of what is drag and what is lift, or what is drag force and what is a lift force. ठीक है, in the next class we will continue with the expression for drag and lift, or coefficient of drag and coefficient of lift, वो सब आता है. ठीक है, hope you understood. If you have any doubts you can contact me to my personal WhatsApp number. ठीक है, चलो, thank you, have a nice day.